Okay. Now, welcome all. Today, we are going to conduct the physics doubt class test. And the students who are there already aware with the things that what we are going to discuss in our topic related with the physics. Now, let me know if any doubt you have, any doubt you can raise your questions. If any doubt, you can raise your question first. Let us deal. I think the students mostly of class 9th and 10th are there. Mostly the students who are belonging to class 9th and 10th are there. So any query you can ask. Yes, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, Roshan. Yes, follow. Sir, I have a question, sir. There Bolo. three 2 ohm resistor ABC are connected. Sir, let me show it. Sir, figure है. Just open your. Yes, bolo. Question number 20, sir. Question resistor. number 20. Okay, read out. What is there being in question 20? 2 ohm resistor ABC are connected as shown in figure. In this figure, sir. 12.7. Yes. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watts without melting. Find the maximum current that can flow through the 3 resistance. Now this 3 resistance, you can see that A, B and C. B and C are connected in parallel. And B A and is C are connected to connected the series. parallel. So first of all, you have to find out the resultant resistance. Yes, sir. First of That all, is you 3 find ohm. out the resultant resistance, that is the total resistance when B and C are in parallel. Just go through it. Sir, And the then total resistance is 3 ohm. I found it. 3 ohm just by parallel series connection both. So in parallel there is 1 ohm resistance, that is B and C. Okay. And sir, in series that is given A 2 ohm resistance. So net resistance is 3 ohm. Total resistance you are getting 3 ohm. Then what is being given next? Sir, each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Without melting, it has been given. Actually, Yes, I am not getting the questions clearly over here. Let me see. Roshan, let me do one thing. Just keep that question in my WhatsApp so I can convey there. Okay, on that. Okay, sir. Okay. So other till then, other you can ask the questions there. Sir, I've sent that question. Yeah, I've seen that questions then. Yeah. Yes, speak out. Roshan, speak out. Yes, sir. Sir, then each of them dissipates energy. This is the question, I think. Yeah. Question number 19, correct? Sir, 20. 20, yeah. Yes, 20. You have got three resistance of 2 ohm each, ABC. First of all, you find out the total resistance in the circuit. That you have got it? 3 ohm. 3 ohm. Yes, sir. And then the power is given? 18 watt. 18 watt. Yes, sir. Okay, and you have to calculate what? You have to find out the current through the circuit. Yes, sir. Huh? Yes, sir. So just you go through the formula that you know about the power. That power is equal to when
Just to recall the Power formula. equals to Power, VI. Then V we into can I. replace V from Ohm's law that I square R. Yes. So, sir, after doing this, let's just see it. So I'm Hmm. putting the values. Root under 18 by 3. I'm getting, sir. Power is given V into I, but you don't have the power value of V. Potential difference is not given there. No, sir. So I have converted this V into I square, IR. I square into R. Yes, sir. Okay. Then you are getting, Jitendra sir, on your video, sir, on your video. Board hai to sir, you can use the board also. okay. Okay, just let me see first. Yes, Roshan, open your video, just let me see. Sir, I have opened it. Oh, Camera is open. okay. So power, it is giving 18 watts, I square R. Then you are getting the value 18 by 3, that is 18 by 3, 6. Ampere, sir. But answer is 3. Answer you are getting? Sir, answer in book, the answer is given 3 ampere. But here what you are getting? You are getting near Root about under 18 by 3, 3. that is 6. Root Yes, under sir. 6 Root under ampere 6. you are getting. Yes, sir. But answer is Huh? not this one. So once again go through the resistant part. Resistant part you see, just you go through the question once again. Go through the question once again. Sir, 3 2 Turn on ohm to the resistance. question. Turn on to the question. Question में एक बार फिर से जाओ. Yes, sir. 3 2 ohm Okay. resistor A, B, C are connected as shown in figure 12.7. Okay, so one is connected, other. Okay, so And- total resistance you are getting 3. Yes, sir. 3 Okay. ohm. Yes, Power sir. is getting 18 watt, and you Yes, have sir. to calculate the current through the Current. resistance. So that is the correct answer. You have what you have got. That is correct. Sir, but Okay, don't answer go is through it. given 18 by 2, and from there it is given the 3. No, but you cannot change your answer. You can see your calculation. The Yes, total sir. resistance you are getting. Total resistance. Let me show you on the board. Just once again. Are you getting it, Roshan? दिखलाई दे रहा है? No, sir. Board. देखो, No, you sir. are getting the total resistance. What? Total resistance. That is total resistance you are getting. That is 2 ohm plus 1 by 2 plus 1 by 2. Yes, sir. Right? Yes, sir. So here you are getting 2 ohm and plus, that is you are getting overall 2 ohm plus 1 ohm. That is total you are getting 3 ohm resistance. So resistance is already given 3 ohm. Yes, ठीक है, sir. यहाँ तक ठीक है. Yes, sir. Then you come to the term power आपका दिया हुआ है how much? 18 watt. Yes, sir. है? And we know power is equal to V into I. ठीक है? Yes, Or sir. from Ohm's law, yes. And from Ohm's law also, that Ohm's law, we are getting V by I is equal to R. It means that V is equal to I into R. यही ना? ठीक Yes, है? sir. Putting the value of V in this equation you see here. So ultimately we are getting what? I square R. ठीक है? तो Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि आपका जो पावर है P is equal to I square R, and we have to calculate, हमें कैलकुलेट करना है I का वैल्यू. ठीक है? तो I square is equal to क्या होगा? P by R. Yes, तो sir. आपका P का वैल्यू है 18 divided by 3. So you are getting the answer 6, or Yes, sir. I is equal to under root over 6 ampere.
Yes, sir. Then I also got the same answer. I think Same the answer, answer so this is of the correct. question is wrong. नो, ऐसा हो सकता है कि आंसर आपका गलत भी दे सकता है कई बार बुक में जो है, लेकिन Yes, जब sir. कैलकुलेशन तुम देखोगे, देखो पहले रूप में देख लो कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में वो दैट इज 3 ओम, क्योंकि 2 ओम Yes, का sir. रजिस्ट्रेशन आपका सीरीज में एंड अदर 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। Yes, sir. तो टोटल तो रेजिस्टेंस आपका 3 है, पावर आपके पास 18 वाट है, ठीक है। तब व्हेन वी गो थ्रू द फार्मूला P is equal to V into I and we have to calculate the V. तो V according to Ohm's law V is equal to I into R हमको मिला है ना, Yes, sir. ठीक है। तो फाइनली इसको हम पुट अप करेंगे, जो आप वैल्यू देख रहे हो, तो इट कम्स √6. Yes, sir. √6 एम्पियर, इट इज द राइट आंसर। Okay, sir. कई बार ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, ठीक है। Yes, sir. ओके, क्लियर। Yes, Rani, you want to ask? Yes, sir. Sir, हाँ, बोलो। one question you were given in class that was not. Sir, a railway track. एक मिनट। Sir, on your video one, sir. On your video, so student can see the things. I think it is camera is on direct on the board. Camera is off, sir. One check the camera. मैं आपको ये कर रहा हूँ, आप एक मिनट। Now I think you are able to see the board, Pawan sir. नो सर, बोर्ड नहीं है, आगे फ्रंट बैक कैमरा करो सर, कैमरा होगा बैक कैमरा। बैक कैमरा, हाँ, बैक कैमरा करो। हाँ, ठीक है। Now it is available. now okay, Now okay. So Roshan, you have got your answer. Your Yes, sir. calculation is right. ठीक है। कई बार बुक में जो है सो गलत दिया हुआ रहता है आंसर जो है, लेकिन you just believe on your calculation part, ठीक है। Yes, sir. Okay. Yes, anyone? Rani? Sir, I am sharing the question. हाँ, you just say, बोलो क्वेश्चन क्या है उसको बोलो। Sir, a railway track 520 kilometer long, a train travels the first 230 kilometer at the uniform speed of 1 80 minute. kilometer per Just first of all, you just write down हुआ है। तुम्हारे डाटा में क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले बताओ। Sir, a railway go- track of 5 kilometer long. 5 kilometer, Sir, 520 kilometer. 520 kilometer. Okay. 520 kilometer long. Yes. Sir, the first 230 kilometer at the uniform speed. 230 kilometer. 230 kilometer. हाँ, बोलो। Uniform speed. Sir, average speed 70 kilometer per hour. मतलब first 230 kilometer is being covered Sir, at an uniform average speed speed of, 80 kilometer per hour. मतलब 230 किलोमीटर को कितने स्पीड में कवर किया हो? 70 किलोमीटर पर आवर और 80? Sir, 80 kilometer per hour. 80 किलोमीटर पर आवर, यही ना? अच्छा, नेक्स्ट।
Yes, sir. Sir, average speed 70 kilometer per hour. You just read out the question, full question पढ़ो. ये टोटल लेंथ जो है, टोटल जर्नी है 520 किलोमीटर का, यही ना? एंड द ट्रेन Yes, sir. कवर्ड फर्स्ट 230 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यही ना? Yes, sir. ठीक है, तो 230 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगा? 80 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से आपका गया. देन रिमेनिंग किलोमीटर हाउ मच? रिमेनिंग कितना बचा? 520 minus 230. How much you are getting? 290 किलोमीटर आपको और जाना है. तो 290 किलोमीटर को कितने मिनट में आप कवर करोगे? यही ना क्वेश्चन है. द टाइम रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर. Yes, sir. आपका एवरेज स्पीड होना चाहिए 70 किलोमीटर पर आवर, यही ना? टोटल. तो आप देख लो कि टोटल डिस्टेंस आपका 520 किलोमीटर है. ठीक है, एंड एवरेज इज द एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम. ठीक है, आपके पास टाइम नहीं पता है, यू नो द एवरेज स्पीड आपका 70 है किलोमीटर पर आवर, and total is the 520 kilometer is the length. Then you have to calculate the time. So time is equal to कितना होगा? Time you are getting 520 divided by 70. बोलो. Divide it. How much you are getting? 520 को 70 से divide करो. Sir, 7.42. So you are getting the time तुमको मिल रहा है 7 hour 3/7 hour, 7 3/7 hours. ठीक है, this much time is the required time, 7 hours and 3/7 hours. ठीक है, अब आपने 80 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से 230 किलोमीटर कवर किया. नाउ यू कैलकुलेट कि 230 किलोमीटर कवर करने में आपको कितना समय लगा. You divide 230 by 80. How much you are getting? 23 को 8 से डिवाइड करो. Two hour 7/8. 7/8 hour you are getting. देखो 7/8 hour. ये ऑलरेडी 230 किलोमीटर को कवर कर लिया. एंड नाउ आपके पास टाइम कितना बचा? हाउ मच टाइम नाउ लेफ्ट विथ यू रानी? टोटल टाइम आपका 7 3/7, दैट इज 52/7 आवर्स में से आप माइनस कर लो कितना? 23/7. You just 52/7 कैमरा फिक्स कर सकते हैं क्या सर? 23/7 आवर्स को माइनस करो. सर कैमरा फिक्स बचेगा? कर सकते हैं क्या सर? हाँ, कैमरा फिक्स कर सकते हैं. पूरा टोटल दिखा हुआ नहीं दिख रहा है बोर्ड का. आई थिंक कैमरा फिक्स करेंगे. अभी जो कैलकुलेशन है वहां इसको दिखला रहे हैं. ओके 52/7 you just get it minus. How much you are getting? 52 से 23 माइनस करो. 29/7 hours.
ये आपके पास रिमेनिंग है, देख लो। रिमेनिंग आपके पास 29/7 आवर्स है। अब इसमें आपको कितने कवर करना है? हाउ मच डिस्टेंस? यू हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 290 किलोमीटर। यू हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 290 किलोमीटर। तब उसके लिए आप एवरेज स्पीड निकालोगे, देन यू कम एवरेज स्पीड, you are getting how much? Distance is 290 divided by time, that is 29/7. So 290 into 7 divided by 29. So overall you are getting an average speed of 70 kilometer per hour आपको maintain करना पड़ेगा। देखो, you get it clear? एक बार फिर मैं बता देता हूँ। Sir, can you show the full board once? Yes, actually, देखो सबसे पहले क्या है, आपका टोटल लेंथ 520 किलोमीटर है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 520 किलोमीटर यू हैव कवर्ड 230 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपका रिमेनिंग कितना बचा? 520 में से 230 को माइनस कर दो, यू आर गेटिंग 290 किलोमीटर। तो 290 किलोमीटर इज द रिमेनिंग आपका बचा। अब आप देख लो, एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है। एवरेज स्पीड, टू मेंटेन दिस एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 70 किलोमीटर पर आवर इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टाइम आपको नहीं पता है, यू आर कैलकुलेटिंग द टाइम। देखो इधर 70 किलोमीटर एवरेज, ये 520 किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड देन यू कम टू द टाइम। तो टाइम आपका आ रहा है, टोटल टाइम इज 7 आवर 3/7 आवर, दैट इज फ्रैक्शन में इसको लेंगे तो इट विल कम 52/7 आवर्स। तो 52/7 आवर्स इज द टोटल टाइम, ये टोटल टाइम लग रहा है। अब आपको देखना है कि 230 किलोमीटर्स में कितना टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया है। देन यू कम टू हियर, टोटल टाइम आपके पास इतना है। और फॉर कवरिंग 230 किलोमीटर, how much time you have already spent? That is the 29/7 hours. So 29/7 hours already आपने invest किया है। Out of this 52/7 hours, then you see the difference. Difference आप देख लो, 52/7 hours minus 23/7 hours, and you are getting the time 29/7 hours, ठीक है। तो 29/7 hours को जब करोगे, इसको फ्रैक्शन में लेकर आओगे तो कितना आएगा? 7 4 जा 28, so near about 4 hours and 1/7. 1/7 hours you are getting the answer. Is it clear, Ani? Yes, sir. समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है? बोलो। No, sir. Yes, Pawan sir, is it clear now? ये थोड़ा और दूर से रखना सर, ये पूरा बोर्ड इट्स नॉट विजिबल सर एक्चुअली, फुल बोर्ड अच्छा। मस्ट बी विजिबल देयर, because other students those who are watching on YouTube they also can see the board there. Okay, okay. Now okay, now थोड़ा और पीछे कर दो सर कैमरा।
So try to fix there ना sir. Try to fix that. आप fix कर दो board को कहीं भी, मतलब camera को कहीं fix कर दो. That will be easy for you to say the answer. If it is possible. Okay, okay. So board fix नहीं हुआ sir. I'm audible, Jiten sir. Is it clear, sir? Yes sir, yes sir. Okay. Okay, yes, next. Next, any doubt? Yes, Sital, bolo. Sir, what is the difference between resistance and resistivity? Resistance and resistivity. You Yes, see, sir. resistivity is the property. That is the characteristics property which depends upon the nature of material only. But if you talk about the resistance, then there are other factors also on which the resistance of the conductor depends. Okay. For that, you have got the length of the conductor. Then you are called the area, the cross-sectional area, then the nature of the material and the temperature. These are some 4 factors on which the resistance depends. But if we talk about the resistivity of the substance does not depend on the length or the thickness. It is just the characteristics property of that material. And it depends only on the nature of the material. So, sir, we can say that it depends on the cross section of any conductor. Resistivity. Yes, follow. Sir, we can say that resistivity depends on the cross section of any area. No. Actually, this is the basic difference between the resistance and the resistivity. देखो, resistance जो है, you just see this resistance R, ठीक है? It is directly proportional to the length of the conductor. Means if the length of the conductor increases,
the resistance also increases. Then the second factor, the R is inversely proportional to area. That is, if the area, that is the cross-sectional area, or we can say the thickness. यहाँ हम कह सकते हैं जो thickness of the wire है, conducting wire, वो ज्यादा बढ़ेगा तो आपका resistance कम होगा. This is the relation between them. And from this 1 and 2, we can say that R is directly proportional to L by A. ठीक है? Length पर direct proportional है and cross-sectional area, that is the thickness, that is inversely proportional. अभी देखो कि sign of proportionality को जब हम हटाते हैं, तो we are using a equality signs. That is, this can be represented as R is equal to rho into L by A. This one, rho is called the constant, which is also called the resistivity. Rho is called the resistivity. It is called the resistivity of the material. Yeah, of the conducting material. Conducting material जो भी है आपका, ये rho जो है ये constant है, और this is the relation. अब दोनों में difference देखो कि resistance of any conductor depends on the length, cross-sectional area, nature of the material, and also temperature. 4 factors are there. But if we talk about the resistivity, resistivity only depends on the nature of the material. ठीक है? Resistivity किसी भी length या किसी भी cross-sectional area पर depend नहीं करता. ठीक है? ये एक characteristics property है. Did you get your answer, Sital? Yes, sir. Yes. Now anyone else? Yes, Pragya, bolo. Yes, a moving will drop to rest within 30 seconds by applying brakes. Find the initial velocity of the train if its acceleration is 0.3 meter per second square. ठीक है. Now you just see, for solving any numerical, first of all, what you have to do? You just write down all the given data. First, write down all the given data, क्या-क्या आपको उस क्वेश्चन में दिया है. ठीक है? देखो, start from the first. क्या-क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? बोलो. Yes, speak out. So the moving train will drop to rest within 30 seconds by applying. Moving train come to rest. देखो, Yes. as per your question, the train comes to rest. Train comes to rest. ठीक है? That is, the final velocity is 0. V is equal to 0. ठीक है? Final velocity 0 हो गया. अभी moving train है, you have to find out. आगे पढ़ो क्या है? So Yes, read out your within question. 30 seconds by applying brakes. Find the initial velocity of the Time train is if its given 30 acceleration is seconds. 0.3. चलो. You have to Yes, find out sir. the acceleration. क्या find out करना है? No, sir. Initial velocity if the train if the acceleration is 0.3 meter per. अच्छा, initial velocity you have to find and acceleration is given 0.3 meter per second square. यही ना? Yes, sir. देख लो. Yes, sir. You just see your data. आपका डाटा दिया हुआ है, train is moving with a velocity. ठीक है? So that you have to find. Initial velocity आपको find out करना है. And finally it come to rest. मतलब final velocity is 0. V 0 है. Time period आपके पास 30 सेकेंड है. And acceleration is given. Is it right? Yes, sir. यही दिया है ना? अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या जानते हो? A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी है। अब यहाँ पर आपके पास A का वैल्यू है 0.3, V is 0 and this is you have to find out and time is 30. ये है, Yes. ठीक है ना। Then you come to the calculation. 0.3 multiplied by 30 is equal to how much you are getting? Minus u. अभी देखो यहाँ हम माइनस यू नहीं लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन में आ रहा है, बट वी शुड नोट इट डाउन कि यहाँ एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन पार्ट मैंने बताया था कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन द फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब आपका इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगा, उस समय वो एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब that negative acceleration मतलब retardation. So we will put the value of -3, that is minus, we are putting here the sign minus, देखो क्योंकि यहाँ आपका acceleration जो है ये retardation में change हो रहा है, ठीक है। And here we will cancel both minus u और ये minus दोनों cancel कर दिए। You are getting your initial velocity as 9 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 9 मीटर पर सेकेंड है, आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हो, राइट? Yes, sir. डिड यू गेट योर आंसर प्रज्ञा? Yes, sir. आ गई समझ में बात? ठीक है। Yes, sir. देखो कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल द गिवन डाटा। गिवन डाटा जो है उसको पहले आपको लिखना है। गिवन डाटा में सारे चीज आपने लिख दिया, एंड देन यू सी व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। और जब सारे डाटा आपके पास है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो एट दैट टाइम यू अप्लाई कि आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा है फर्स्ट एंड सेकंड, आप उसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। तो नियरली हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ला रहे हैं, each and everything is given here, acceleration that is negative acceleration, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, मतलब लेस देन द इनिशियल, and we are getting by putting the magnitudes of the given formula, we are getting the initial velocity 9 meter per second. हो गया? Yes, sir. Okay, who else? Yes, Vaishnavi and Abhinav. Sir, a car moving with a velocity of 50 km per hour. Brakes are applied and the car stops after 10 seconds. Find out the acceleration and distance. देखो तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो गिवन डाटा है, पहले गिवन डाटा को लिखो, क्या क्या गिवन डाटा आपके पास है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने दिखलाया ना कि सबसे पहले नोट डाउन करो कि क्या क्या गिवन डाटा इज देयर। यस वैष्णवी बोलो, आपके पास क्या क्या डाटा है? Yes, sir. Sir, velocity of 50 आपका km इनिशियल per वेलोसिटी hour. क्या है, यही ना? Yes, sir. 50 km per hour. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू का वैल्यू क्या है? Sir, 50 km per hour. 50 किलोमीटर पर आवर। चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड।
Okay, sir. ठीक है, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करो, that is 50 into 1000 divided by 3600, that is meter per second. How much you are getting? You are getting 125 by 9 125 by meter per 9. second. Yeah, Yes, sir. this is your initial velocity. उसके बाद क्या पूछ रहा है? और आपको क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड है? Sir, brakes are applied and the car stops after 10 seconds. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका है, that is v is equal to 0, क्योंकि कार रुक जा रही है. Yes, sir. Time is given 10 second. Okay. Yes, sir. और क्या दिया हुआ है? एक्सीलरेशन. Sir, find out the acceleration and distance. Okay, so you have to find out the acceleration first. तो एक्सीलरेशन के लिए देखो आपको अब क्या क्या दिया हुआ है, u है, v है, t है. So by applying the first equation of motion from first equation of motion, a is equal to v minus u by t होता है. ठीक है. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो v तो तुम्हारे 0 है. Initial velocity is 125 by 9 and time period is 10 seconds. So what it comes? Minus 125 by 9 into 10. ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यू कैलकुलेट इट. कैसे करेंगे इसको? 125 by 90, you just do the calculation. 125 by 90, how much you are getting? Sir, 1.38. 1.38. 1.38, huh? So nearly you are getting minus 1.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अभी देखो एक्सेलरेशन को हम माइनस नहीं कर सकते. ये माइनस जो है इट इंडिकेट्स द रिटार्डेशन. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन. रिटार्डेशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन कम टू रेस्ट, ठीक है, जब वो फाइनली 0 हो जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो उस समय जो उसका एक्सेलरेशन है वो निगेटिव शो करेगा. और निगेटिव एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन होता है. ठीक है. तो यहाँ हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, लेकिन ये एक्सेलरेशन निगेटिव में आ रहा है, देख रहे हो. तो दिस निगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन. तो ये कब होगा? व्हेन फाइनली द व्हीकल स्टॉप्स. तो ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया. आपका एक्सेलरेशन 1.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है. ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रिटार्डेशन. देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. अब कितना डिस्टेंस कवर किया? दिस एस डिनोट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दैट टाइम. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? We will come to the second equation of motion. अब second equation of motion लो. Second equation of motion पढ़े हो? Yes. देखो इधर.
अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, now we will come from the second equation of motion. What we know, S is equal to ut plus 1 by 2 at square. ये पढ़े हो? Yes, sir. चलो, Yes, sir. u का वैल्यू कितना है? 125 by 9. यही है u का वैल्यू. Yes, sir. Time is Yes, 10. sir. ठीक है. Now you see your acceleration is given negative. तो यहाँ पर हम प्लस के जगह माइनस लिखेंगे, मतलब प्लस 1/2 इंटू माइनस 1.38 इंटू टी स्क्वायर है. टी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, दैट इज 100. समझ रहे हो? Yes, sir. अब इसका कैलकुलेशन करो. 125 डिवाइडेड बाई 9, दैट कम 13.8. देखो, दिस इज द वैल्यू. 125 by 9 क्या है? u का वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम गिवन 10 सेकेंड, प्लस हाफ 1/2 a का वैल्यू वी आर गेटिंग माइनस 1.38. और t मतलब 10, 10 का स्क्वायर मीन्स 100. सो यू गो ऑन कैलकुलेटिंग इट. 125 by 9, हाउ मच यू आर गेटिंग? Sir, 13.8. 13.8. Then out of this 138 into how much you are getting here? Now 125 by 9, 13.8 into 10 you are getting here, and minus 138 divided by 2. समझ रहे हो? 1.38 multiplied by 100 कितना आ जाएगा? 138 होगा, divided by 2. So you are getting it 138 minus 69. So overall you are getting the distance is 69 meter. Is it clear? Yes, yes, sir. दिखाई दे रहा है बोर्ड? Yes, sir. देखो, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी आर टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बता रहा है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और यू पुट इट द वैल्यू, u का वैल्यू आपको आया था इनिशियल वेलोसिटी का 125 by 9 multiplied by 100, then plus half, and the value of acceleration negative है minus 1.38 into t square, that is square of 10, you are getting 100. So overall calculation you can get that the distance covered is 69 meter. मतलब क्या हुआ कि सडन, ऑल ऑफ ए सडन कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, सपोज करो कोई कार है, उसको अचानक ब्रेक लगाओगे तो वो तुरंत नहीं रुकेगा, बल्कि क्या होगा, वो स्कीड करेगा, खींचते हुए कुछ दूर तक जाएगा. बिफोर इट कम टू रेस्ट, it will cover a certain distance, and that distance we have calculated according to your question. The distance is 69 meters. Now is it clear? Yes, sir. Yes, any more?
Yes, sir. Bolo. Sir, a current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 5 ohm. Then connected to 10-volt battery. Calculate the resistance of the electric lamp. सर ये हो गया है ना सर, उसका जो सेकंड पार्ट है ना वो नहीं बना है. Now if the resistance of 10 ohm is connected in a parallel with this series combination, what change in the current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place? क्वेश्चन को अपना ये करो, डिस्प्ले करो क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 26 सर. डिस्प्ले करो, उसको दिखलाओ क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. शो योर क्वेश्चन, दिखलाओ. ओपन योर वीडियो एंड शो. सर वीडियो खोले हुए हैं. So, okay, sir. So time is about to complete for the session there actually, and so students, what I'm saying, we have again session with Jitendra sir on Sunday there. Okay, so Sunday evening same time 6:30 we are having the sessions, and that time we will just see those things again. Okay. Okay. So okay, thank you everyone, and thank you Sujinal sir. So okay. Okay, everyone. Thank you for joining the sessions. And again, every day we are having the session, correct? So daily we are having 6:30 to 7:30 sessions there. So do join on time, and please follow the videos there. So at least you can get the idea what you need to ask there, correct? So do it that one. Okay.